हाँ टाइमर अभी टाइमर कौन देख रहा है हैं? हाँ उनको उनको जाके बोलो ना उधर जाओ उनको बोलोगे उनको भैया आपका एग्जैक्टली। वाइट बैलेंस क्या है? दीपक भैया आपका वाइट बैलेंस कितना है? केल्विन पे था ना? A very good morning, guys. This is Tahir Siddiqui, your commentator for the game. Pool B match, the first Pool B match between Aces and Suicide Squad. The toss have happened. Suicide Squad has won the toss. They have chose defense, and they're starting with 4 female. On the line we have, for Aces we have Kirtika, we have Talib, Shushant, and here we have Arul and Jashan taking over the commentary. It'll be a fun thing to watch. The first comes up. I'm handing over the mic to Jashan. Good morning. Immediately some red ants biting me. Alright, here with Tejas and Arul. Game started. Sushant with the disc. We have Project Fly versus Suicide Squad for you today. Centered to Manav. Manav looking forward. Couple of cuts at the same time. Maybe early moments. Big swing to Talib. Talib back to Sushant. And now there are no cuts. Ritika makes a good cut, but put up in the air for Talib. Should be able to get that, and does. Pretty easy. 1-0 to Project Fly, but there's a call. Have some nice hand signals. Swinging of the arms, so people realize. We have scorekeeper Rushi. I guess it's a foul call. Yeah, Tejas is here with me. Anything to say, Guys. Tejas? Hello, this is my first time trying to do some commentary. Jashan did a really good job in Bangalore. Yeah, that's what everyone's saying, that you should retire from playing and just stick to commentary. Some call on the field, a little too much talking. You can hear Sagar shouting on the sideline. Sagar is the coach for this Project Fly team called Aces. One of the 3 teams here at off-season. Ritika gets this. There's another call. Looks like an injury. Hopefully it's not too bad. Looks like Shiva on the floor. Some contact, but he seems okay. Shireen and Shiva are now banging with each other. We'll be back shortly.
turn wrong. Is now. Risk back with Ajay from Spinergy. Horrible. Okay, we are back. Some current passing through the mic gave us a shock. We're still at 0-0. Definitely too much talking. We need to get the game moving. Games are to 13 in the pool stages. 75 minutes. Suicide Squad versus Aces. Suicide Squad is a pickup team from all over India. A real mix of people from all over. A good initiative taken by Ravi to set up a competitive team from all over India just for this tournament. Sirte with risk on the sideline. Upfield to Ajay. Ajay centers. A little behind but still gets it. One more swing to Vishnu. Vishnu to Shiva. And into the end zone. That's the first score by Namrita. 1-0 Suicide Squad. Long point, but pretty clean towards the end. Alright, second line on the field. As I said, Sagar Sharma leading the Aces team, and Raghu on this side coaching the Suicide Squad. Couple of Auroville, L2F and NFC players on the Suicide line. Kush with the pull. Stays inside. Ajay picks it up, centers. To Pavan. Back to Talib. Pavan to Sunny from Delhi. Sunny to Ajay from Airbenders. Upfield to Sheetal. Quick call, but much better sorted this time. Upfield to Talib. Talib takes the shot. Good throw. Can she keep it in? Does pretty easily. Ritika one-handed makes it look easy. Needs one more pass and gets it done. 1-1.
we have Rishabh on the line. Rishabh, one of the organizers, founders of Off Season Ultimate. Rishabh catches the pull, centers to Smithy. Good timing of a cut by Kunal. And he has someone going deep. Takes it pretty delayed. Let's see if it works out. Ooh, almost. A couple of people get their hands onto it. It's good to see Rishabh on the field. A pretty tall man on the disc mark. Gets broken immediately. Sapna with the disc. Looking for Arun VC. Jigar gets the disc. Hucks it to Karan. Beautiful throw by Jigar to Karan. If I have to make the team, definitely Rishabh is in my team. But Maqsood has to say that. Great deep receiver, Karan Arora, one of the leading scorers in the MUL seasons. And that's a break. So, Arul, how does it feel seeing Rishabh on the field? It's pretty weird because he's always on the organizing side, but it's also good to see him on the field. Kudos to Raghuveer for giving him an opportunity to play. We'll see how he plays. Just so you know, Rishabh is back-to-back OSU champion. In Delhi showcase, he played with Grumpy's, and they won. And before that, MUL, Cutting Chai. Cutting chai, yeah. So maybe he's what's necessary to win. Alright, we have O-line out, Kush Pakela, Jagdish, Dwani Jain, Smithy, Kumari, and Pooja. Nice pull by Ritika Solanki. Oh, goes through the legs of Dwani. I don't know what she was trying to do over there. But good cut by Jagdish. Always looking for the huck. Doesn't get it this time. Gets a good cut by Kush coming in. Fake. Jagdish gets the upline. Again, looking for the huck. This time he puts it up. Let's see if he can connect. Pretty easy. Good cut by Pakela. Score. Oh, and there's a call. Seems like a travel call. It's on the pass before. So it's a stall out call on Kush.
ball calls are, I think, the most contested call in Ultimate. It's just too difficult to figure out if you threw before or after the t of the 10. And as expected, contested. Should come in a high stall now. Let's see if we can get the dump off. Swings it immediately. Jagdish with the disc. Jago to Kumari. Kumari centers to Smithy. Smithy looks one more. No. Gets the upline from Jagdish. And now he has a deep cut. Puts it up in the air. Let's see if Kokela can get score 2 in this point. Ah, got a hand to it. Couldn't bring it down. Rizwan picks up the disc for aces. High release to Pavan. Pavan to Ritika. Ritika doing a good job so far. To Sapna, little blady. Jagdish gets the disc. An immediate huck by Jagdish again. Rizwan versus Kumari. She's thrown into coverage. Good D by Rizwan there, avoiding contact and getting a clean lead. Suicide Squad really need to control those looks. They want to make some cleaner offense. The call is no backhand forehand. So basically no throws. Upfield, great catch by Sapna. Upline to Rizwan. Loves that forehand flick. Has Jigger completely free, so Little contact between Jagdu and that Sucide, the aces. And aces, Jagdu calls a pick. Is one too close to the cameraman. I think the cameraman took his backhand up the line throw. Rizwan doesn't like his backhand anyways. But cameraman didn't help him. Rizwan to Ritika. Girl's doing a great job on this aces team. Pavan, Ritika. Ritika upfield. Score. Oh, just on the line, not called a score yet. Need one more pass to get that in. Should be looking at her dump, but looks upfield and gets the score anyways. Mansi to Sapna. Yeah. Girls on the aces really. Ritika running this aces offense. And it's 3-1 to aces, I think. One side.
Project Flight had, I think, 2 practice camps already, so you can see there's a little more chemistry than this pickup team from all over. Individually, looks like great players, but still need to find their groove. Sanya with the pull, hovers about 3/4. Smithy to Jaggu, Jaggu to Smithy. Oh, he had the shot for Q, didn't take it. Rare for Jaggu not to take a deep look. Q with the disc. Jagdish to Smithy. Smithy puts it up to Q, and that's a score. Beautiful throw by Smithy. Three-two. Long 0 points so far, looking forward to a clean, smooth, quick. Or some crazy defensive plays. I don't think we've seen many crazy defensive plays till now, but as the tournament progresses, I think with the quality of athletes over here, you're going to see a lot of quality defense. Yes, you should stay tuned in for the next match against Rajalis versus Ambush for some defensive play. Yeah, that's a big game. Kunal with the pull. Let's see if it stays in. It does. Ritika catches. Centers to Sushant. Sushant to Talib. And a call. Looked like there was a bit of contact. What do you think they're talking about there? Basically, Talib is saying there was contact before, um, which prevented him from catching that disc. I think they're both saying push the door, don't pull the door. Now Sushant is also saying the same thing. And they have accepted. Right, Talib with the frisbee. Shireen to clear. High stall, float into the air, and then up to Sushant, who does and Talib does a good job of boxing out before he scores that point. He was the one who threw that floaty pass in the air, and he was already in the end zone. So quick transition there.
points, I don't know, because Suicide Squad seems to have a really good squad. We are not paid to talk about Rishabh. We just do it because we like him. Big pull. If it stays in, doesn't look like it. And Smithy calls the break. Matchup we are looking forward is Karan Arora versus Rishabh, two twin towers on the field. Um, Rishabh has the upper edge. Breaks his own ankles there, but gets the dump off. And it's a throw straight into the defense. Jigger to Ajay. Ajay looks off Sanya, but then gives the dump anyways. Sanya upfield to Rijwan. Pretty close defense. And up in the air into around 4 players. Not the look that he wanted to take. He knows it too. Gets a lucky disc roll, so at least they're starting from their end zone. Smithy with the disc. Smithy upfield to Vishnu. Has someone going deep, but it's too deep. Rishabh. High release. Nice juke. Gets open for the dump. Gets nice and low to throw that throw straight to Rijwan though. Sanya to Ajay. Ajay to Rijwan. Rijwan to Sanya. Good swinging here. Let's see if they can complete it. Mac from the background saying Karan ko de hammer, which is basically what they did the entire MUL. Sanya's throw a little too low, but good offense. Project Fly have distributed their players to make the 3 teams equal. And people were saying, not me, but people were saying that this team looked maybe slightly weaker, but it looks like they have their offense going really well. Looks smooth. Prasanna with the disc puts up a nice looking throw. A little too far for Kumari, who was completely open. Ajay with the disc. Ishwan dump. Karan goes deep immediately. Doesn't get it, gets the swing instead. Rijwan to Sanya. They're doing a good job of this swinging. Karan gets the big under after going deep immediately. Rijwan looks to center, doesn't have it. Now gets Sanya. Sanya playing really well. Karan to Shireen upfield. Shireen has Ajay. Ajay to Karan. Almost at the doorstep. Need to be patient. Here is where they've messed up a couple of times already. Rijwan loses lots of yards and then puts it up in the air for Karan. Really makes it look easy. Really good point by the Aces. Or at least that offensive flow looked good. Raghuveer calls the timeout, wants to talk about a few things.
was a really good point to see. The flow was great, and the stack was pretty organized. Kudos to the girls like Sanya, who helped in moving the disc forward, and of course you have a tower on the line, Karan Arora, with the score. Suicide Squad called the timeout. We'll see what they tweak to get some points on the board. Captain Arul. Wow, okay. Captain Arul from Rajalis is leaving now to his team to get ready for the ambush. And he needs his jersey, which has been used as an insulator, correct. I'm not an NGO, I am a NGO. Jali's jersey has been changed to an ambush jersey to hold the mic. Quality has already increased. Thanks, Agile. But the Rajali jersey is also Agile? Back again after the timeout and after a wonderful D-line offense point by the Aces. Yeah, by the Aces. With the score 5-2 for the Aces. So far, it just looks like a bunch of players on that Project Fly team just sticking to their roles, and when that happens, you see good things. Lots of these teams this weekend are filled with stars, and sometimes that cancels out each other. Dhwani to Jagu. Jagu always looking deep, doesn't get it this time. Back to Dhwani. Little high, brought down by the Aces player. Nilay, upfield to Sapna. Sapna doesn't like what she sees, gives it to Sheetal instead. GK Mad Girls really running the show here. Mansi with the disc on that sideline. Looks like one of the newer players, but she gets it to Sheetal. GK, GK, GK. हाँ Another break for the Aces. 6-2, 1 point away from the half. Mansi to Sheetal.
आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। Hot day today in Surat with absolutely no wind at all. It's going to be harder to play matches later on in the afternoon. Nice throw by Ajay. Smithy gets a little too much float this time. Oh, and Sushant comes through. Could have done a better job of not knocking some bowling pins over, but centers to Sunny now. Pavan with the disc. Has a deep look, doesn't like it. Centers to Sapna. Sapna to Sheetal. Sheetal to Sushant. Sushant has Pavan upline. Pavan on that sideline gets a good swing to Sushant. Cutter's looking a bit tired. Sapna with the disc. Sapna to Sunny. Sunny to Sushant. Sushant to Sapna. Finally puts it up, and Kush takes it down pretty easily. Lefty to Aditi. Aditi on the sideline. Let's see if she can get it off of here. Dangerous place to be. Kunal bails her out. Kunal to Smithy. Smithy to Kush. Almost in. Patience, and that's the score for Suicide Squad. Score by Kunal. Assist by Ajay. First game for Suicide Squad in this tournament, so they're looking to build some chemistry as they go. 6-3. Alright, we're taking a break for halftime.
We have a half time. The score is 6-3 to Aces. And with me today we have Sneaky, also known as Nishan Mahadeva from Bangalore, who will be commentating with me for the another half. And I would like to thanks Jashan for taking up the commentary in the first part. They have a meeting up coming up for Ambush, which will be playing the next match against Rajalis. That will be on field 2. So kindly tune into field 2 to watch Rajalis versus Ambush, which will be a thriller match. So Sneaky, what do you think about the match? Aces versus Suicide Squad. You are a part of Project Fly. Anything you would like to discuss? I would say it's a brilliant match, but before that, I just had my attention towards flywheel cleating up, which is so interesting. I think everyone in the team is wearing a neon socks, a football sock, which is really interesting. That'll be something new. So yeah, back to Project Fly. I think our aim as a Project Fly is to give out opportunities for all the most talented players, and also who has the urge to improve, and that's how Project Fly was born from North, South, and East. About the game, so Suicide Squad is also the team which has been put up by Raghuvi, the all-time known as the person for putting up teams for a very long time. I think I was also a part of the first Singapore Ultimate Open, which is in 2015, which Raghuvi put up a team. I was a part of that team, so I think Suicide Squad is also looking pretty strong, I would say. And yes, the Aces. Aces are gelling up pretty well. It's the first game for them. And looks like it's a junk. Yeah. Crush. So yeah, after half, I think Suicide Squad has started on offense, and they're moving up the disc pretty nicely. There's a short pull, but yeah, they have been capitalizing on it. There's Kush Kotari swinging it to Smithy to Qmil to Jagdish again. Sorry if I don't know the names. That's Jagdish to number 6 and number 6 to Jagdish, and that's the score. The score is 4-6. That is Shiva. Number 6 is Shiva. And that's a score to Suicide Squad. The score is 4-6. Yeah, Nishant, you are continuing with Project Fly and Aces. Next up, we have Aces will be playing with Fly Wild. And as you see, Fly Wild cleating up and all those neon socks. They have come to play like a team and to show that they are the national champions of 21-22 season in India. And it will be a great matchup for Aces to play against Fly Wild. I would definitely agree with you. Flywheel has proven themselves for a very long time, and I think that's the only, I think, the core club team in this entire tournament. Yes, we know Ambush was also registered last year, but if we have to talk about core club teams, which is more than 3 to 4 years, I think Flywheel is the only team in this particular tournament which actually is representing their club. So it will be an interesting game, and Flywheel is also skipping their regionals for the off-season ultimate, which is really interesting. So that's one thing about off-season ultimate, which is made everyone understand that there would be competitive tournaments apart from the UPI tour as well. So it's Pawan with the disc, back to Sachin, Sushant, and Manav's calling 3 meters. And there's a violation called by the shot deep. Looks like a 3-person cup. Interesting to see Suicide Squad coming with a zone when there's no wind.
but it's like to change something up. Manav with a scuba to Pawan, back to Sushant again. The disc back to Manav. Manav to Sushant, the swing. Talib asking for the disc on the sideline, and there's a hug. There's a hug. Direct to the end zone. To Sharing. And that's a score to Aces. The score is 7-4 to Aces. I think if we observe on that particular point, Talib started cutting towards the line, towards the sideline, and that's what when he pulled the deep in. So Sushant had a clear shot to the end zone. I think that's the exact way a cup should be broken or playing against the zone. We don't have to cut a lot, but having a correct push. Sorry guys, I don't think we can continue commentary as of now. We're just checking on a couple of things. Sorry guys, there's some wiring problem here happening at the ground. There's some electrical problem. We are working on it. Hopefully it should be fine by afternoon. And oh, almost there. But whatever, it's been grabbed by Nile, and that's a score. Score to Aces. Assist by Rizwan and scored by Nile. And the score is 8-4 to Aces. On the next field, there's a match going on between Vipers and Surat Catchers. So if you want to check that in between, you can go, and there's one more live stream going on Off Season Ultimate YouTube channel page. You can go and check out. Or you can search for Jumbish versus Vipers and you'll find the stream live on field 2. On this field, Sucide squad is 4, Aces are 8. Sucide squad are 4, Aces are 8. Sagar is the coach of Aces. And I feel like Aces have a good path to the semis. Because if the next game they'll play against Flywild, and whoever wins that match will hold the top seed in their pool. Snakey, are you aware about the scheduling? Anything? Or you're too busy doing dancing at your workplace? Definitely. Actually, I couldn't check much. I've just been busy the last entire week. Diwali vacation.
Not vacation, but basically Going to India Gate. yes, Diwali We vacation. follow you on social media, Ouch. so we are aware about all your busy life. I think the schedule was out by Monday, so I was not. I did not follow that much. But yes, it was. Ooh, that was a brilliant save, and A turnover. a hasty throw away. I think that's the most jinxes part in ultimate. Like whenever a person makes a big effort and gets a D, saves a disc, it's always they always tend to throw it away. Now there's a big call on the field, but I would say that'll be inconsequential, and the player catches up. Yes, I think most of us get this rule wrong. Whenever there's a pick call, irrespective of it's an accepted pick or a contested pick, the person should be catching up to the place where the offense stays the last. Sheetal to Mansi looking to Anundya. And it's a great flow by the women. Anundya looking to Vikas. There's a good dump. And I think there's a line call. He stepped on the line. Line call. We have with us Rohit Kohli जी जी from Delhi coming to support us in terms of commentating, and he has been commentating constantly on field 2. We've been checking out the game at field 2, which was between Vipers and Surat Catchers, you might be aware. रोहित भाई क्या विचार है आपका ये गेम के लिए एसेस और सुसाइड स्क्वाड के बीच में? आपको अभी तक पता नहीं है, बट स्कोर लाइन अगर आप देखेंगे तो एसेस का 8 है और आपका सुसाइड स्क्वाड 4 पे है. अभी फिलहाल गेम पे आते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे. ताहिर भाई अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए. तो गेम में डिस्क कुछ कोठारी के पास, कुछ कोठारी ने हक का ऑप्शन ले लिया है नंबर 13 डीप भागते हुए, बट यहाँ फील्ड के बाहर डिस्क एंड एक और टर्नओवर होते हुए सुसाइड स्क्वाड के साइड से. आई थिंक सुसाइड स्क्वाड को थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे. डिस्क अभी है आपका पवन के पास. पवन के हाथों में डिस्क. मैं बताता रहूंगा नाम, आप फिक्र मत कीजिए रोहित भाई. ठीक है, हम आपका नाम यहाँ से साइड लाइन से हक कर दिया, भाग रहे हैं डीप में और डिस्क जो है वो बाहर. कुछ ज्यादा ही जान लगा दी इन्होंने, वो नाप ही नहीं पाए कि फील्ड कितना बड़ा है और डिस्क जो है वो सीधा फील्ड के बाहर जाके गिरी है. सुसाइड के पास एक और मौका स्कोर करने का. डिस्क जा रही है स्मृति जा रही है डिस्क उठाने के लिए. जैसा कि स्कोर है 8-4. एस का स्कोर 8 और सुसाइड का स्कोर 4. रात को काफ़ी प्लानिंग हो रही थी वैसे ताहिर भाई इनके रूम में. सागर जो है इनके कोच काफ़ी प्लान करके आ रहे थे कि हम ये चीज़ों के ऊपर काम करेंगे. अब यहाँ से आगे इनकट काफ़ी अच्छा इनकट मिला, फोर्सिंग फोर हैंड करते हुए अराउंड थ्रो के लिए देख रहे हैं वो पीछे. जी नहीं, अराउंड थ्रो नहीं दिया, आगे डिस्क फेंक दिया हवा में. क्या टर्न ओवर? जी हाँ, यहाँ पर टर्न ओवर ले लिया है नंबर 09 ने, पवन ने, टाइम आउट का इशारा करते हुए. टाइम आउट आपने बराबर से लिया है कि नहीं लिया है. और ये गेम में अगर आप इजीली देखोगे, ये गेम में बहुत कॉल हुए हैं शुरुआत से ही. अगर आप देखेंगे ये गेम में कम से कम अभी तक 15 से 20 कॉल हो चुके हैं. एंड कॉल रेजोल्यूशन में थोड़ा टाइम जा रहा है, तो टीम्स को वर्क करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट. जी ताहिर भाई, मुझे लगता है जिस प्रकार इस माहौल में गर्मी बढ़ रही है उसी प्रकार गेम में भी गर्मी बढ़ती जा रही है.
जो हमें साफ देखने के लिए मिलती है। मुझे लग रहा है ये टाइम आउट का कारण जो है काफ़ी लंबा ये पॉइंट चल रहा होगा, जिस वजह से इन्होंने टाइम आउट लिया है कि बार बार उठा के ये जो हकिंग गेम है अभी वो उसको कोशिश करेंगे कि 1-1 करके जो है वो स्कोर करके ख़त्म करे। और ज़रूरत भी थी उधर टाइम आउट की। अगर आप देखेंगे तो दोनों टीम ने कम से कम दो बार 3 बार टर्नओवर कर दिया है। अभी भी जब साइड लाइन पे पवन जब डिस्क लेके आए थे उन्होंने डायरेक्टली हक किया इंस्टेड ऑफ मूविंग द डिस्क अप, तो बहुत ज़रूरत थी वो टाइम आउट की। एंड सुसाइड स्क्वाड ने आई थिंक 3 से 4 टर्नओवर ऑलरेडी कर दिए पॉइंट में, 2 या 3 टर्नओवर एसिस ने किए ये पॉइंट पे। तो ये अच्छा टाइम आउट है मेरे अकॉर्डिंग, ये अच्छा टाइम आउट है बिकॉज अभी एसिस कैपिटलाइज कर सकता है ये टाइम आउट के बाद। एंड क्योंकि डिस्क ऑलमोस्ट ब्रिक मार्क के पास है तो आई थिंक 1 और 2 passes शुड बी इनफ टू स्कोर। जी बिल्कुल भाई। वैसे भाई मैं ऑफ सीज़न अल्टीमेट को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने अपने पिटारे से एक और कॉन्सेप्ट निकाला है जो ये क्लब इनविटेशनल का। इसके बारे में आप अगर और बच्चे दिल्ली में काफ़ी ऐसे सारे बच्चे हैं, दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में, जिनको पता नहीं है कि ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो हमारा जो मेन जो मोटिव था ना रोहित भाई, वो ये था क्या हम लोग चाहते हैं ना कि जैसे हमारे कंट्री में इतने सारे क्लब्स है और इतना सारा टैलेंट है, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता बाहर जाके खेलने के लिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, आपका दूसरा अलग प्रॉब्लम आता है, आपको बहुत सारी कंट्रीज़ का कभी वीज़ा नहीं मिलता है। तो वो सारे रीज़न की वजह से इंडियन क्लब्स और इंडियन प्लेयर्स है वो बाहर जाके खेल नहीं पाते हैं। तो हमारा एक बहुत टाइम से हमारा एक मोटिव था कि हम बाहर से इंटरनेशनल क्लब्स को इंडिया में वापस लेके आए एंड इंडिया में इंटरनेशनल क्लब्स को लेके और इंडियन क्लब्स को एक्सपोजर दे। बट हमें ये डिसाइड करना था कि हम कौन से इंडियन क्लब्स को, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और लिमिटेड में हम कौन से ऐसे क्लब्स को अपॉर्चुनिटी दे। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम एक नेशनल इन्विटेशनल रखें जिसमें से वो नेशनल इन्विटेशनल के जो टॉप 4 क्लब्स होंगे वो डायरेक्टली इंटरनेशनल क्लब्स का कम्पीट कर सकते हैं एंड वो लोग अपने आप को प्रूव करके आएंगे एंड उसके बाद उनका प्रिपरेशन के लिए कम से कम 3-4 महीने रहेंगे। तो इंटरनेशनल क्लब्स को भी वो कंपटीशन फेस होगा और एक बार अगर हमने इंटरनेशनल क्लब्स को इंडिया में बुलाया और अगर उन्होंने देखा कि इंडियन क्लब्स में इंडिया में जाके खेलने में मज़ा आ रहा है और इंडिया में भी वो टैलेंट है या जा सकते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा। उस पर हमारा ध्यान है। यहाँ गेम वापस होते हुए डिस्क उठाया टाइम आउट के बाद, पवन की तरफ देखते हुए पवन को स्विंग मिला इधर एंड अपलाइन के लिए अपलाइन फेक किया और ब्रेक साइड पे शॉट ले लिया विकास को और स्कोर एसेस। जैसा कि मैं बोल रहा था आपको रोहित भाई, वही 1 या 2 पास और जहाँ थे वो ब्रिक मार्क पे, उन्हें इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो पॉइंट इतना लंबा चला और यहाँ स्कोर हो गया। स्कोर है 9-2 एसेस, 4-2 सुसाइड स्क्वाड। जी बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर भाई जो आपने अभी एक्सप्लेन करा। उम्मीद है जो भी लोग लाइव देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, वो कन्फ्यूज़न दूर होगी कि ये क्लब इनविटेशन में एक्चुअल है क्या। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा आपने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस प्रकार के टूर्नामेंट की जो थी ज़रूरत थी, जो एक्सपोजर था उसकी ज़रूरत थी। उम्मीद है अगले साल उससे अगले साल में आप और कुछ भी नया करने की और कोशिश करेंगे जिसमें और बच्चों को मौका मिले खेलने के लिए। और जो दिल्ली में आपने हाल ही में ऑफ सीज़न अल्टीमेट किया था वो तो बहुत ही लाजवाब रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो तो पूछ रहे हैं कि भैया अगला कब है, अगला कब है। तो मैंने तो बताया कि भैया आपको अगर 1 साल और वेट करना पड़ेगा इसके लिए, जल्दी वापस आएंगे। हमारा बात भी चल रहा है इस बारे में कि हम कैसे कहाँ जाके एक्सपोजर दे सके बच्चों लोगों को। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है, बहुत सारी जगह है जहाँ बहुत सारे लोगों को वो एक्सपोजर की ज़रूरत है। और मेरे अकॉर्डिंग जब आप एक्सपोजर किसी को देते हो और जब आप उनको आइडेंटिफाई करते हो तो वो भी आप उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाते हो और वर्क करना चालू करते हैं। एंड हमारा मेन मोटिवेशन यही है कि इंडियन अल्टीमेट कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें थ्रू टूर्नामेंट्स। और यहाँ पुल होते हुए सुशांत ने बड़ा पुल किया इधर, यहाँ पे पास करा आगे नंबर 27 के पास में डिस्क, यहाँ से एक 4 हैंड ब्लेड आया है ऊपर की तरफ से केपी के हाथों में डिस्क, सॉरी केपी माफी चाहूंगा। नंबर 33 ने आगे पास किया, नंबर 6 आगे देख रहे हैं और ये डी के लिए जा रहे हैं। जी नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। नंबर 64 के पास में डिस्क को अराउंड थ्रो देख रहे हैं, उन्होंने दे दिया। नंबर 27 ने भी दिया, नंबर 12 ने आगे पास किया नंबर 3 को, नंबर 3 आगे देख रहे हैं एंड जोन की तरफ में। जी नहीं, नंबर 00 ने फेंक दिया है। पीछे कौन है, लगता है यहाँ पे कुछ मिसकम्युनिकेशन था डिफेंस में। और क्या बेहतरीन तरीके से वो जोन को ब्रेक किया है सुसाइड स्क्वाड ने। अगर आप देखेंगे जगदीश ने जिस हिसाब से यहाँ पहला स्विंग किया, वो पहला स्विंग के बाद डायरेक्टली क्रॉस फील्ड साइड लाइन की तरफ
थ्रो जाते हुए, जिससे पूरा के पूरा आपका शॉर्टी जो भी कप में जो था, मार्क जो थे, सब पीछे रह गए। उसके बाद वापस पीछे पीछे डम स्विंग किया और उसको अक्रॉस द फील्ड स्विंग किया, एंड देन वो स्विंग करने के बाद एक इजी पास सीधा एंड जोन में स्कोर। जिस हिसाब से फ्लो जाता हुआ बहुत 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 बेहतरीन फ्लो। और मैं वही बोल रहा था कि यहाँ जोन डालने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ विंड बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप बेसिकली अगर आप उनको फोर्स करवा रहे हैं ओवर दी हेड्स लेने का, तो विंड तो है ही नहीं। वो लोग तो लेंगे, जिस प्रकार के प्लेयर्स आए ये टूर्नामेंट में और जिस लेवल का कंपटीशन है, यहाँ वो लोग ये थ्रोज नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल ताहिर भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। एस ऑफेंस के लिए तैयार। देखना है किस प्रकार कोच सागर लाइन पे बताते हुए। जगदीश पुल के लिए तैयार। जगदीश यहाँ पे पीछे से रनअप लेके पुल कर रहे हैं। यहाँ से बैक हैंड हुआ, ये पुल किया है इन्होंने। डिस्क डिस्क क्या उम्मीद है ये अंदर गिरेगा या भारत? जी हाँ, ये अंदर आ चुका है। ताहिर भाई बोल रहे थे कि नहीं आएगा, बट वो अंदर है। एक फोर हैंड थ्रो सनी गए डिस्क के लिए, उनको मन करा एक बीच में से दिया थ्रो। नंबर 10 के बाद नंबर 10 ने आगे पास करा करण को। करण आगे की तरफ देख रहे हैं, पीछे भागते हुए डीप में 0-1 के पास में डिस्क, वो अंदर बुला रहे हैं प्लेयर को, आप अंदर आइए अंदर आइए। सन्नी का डिस्क लेकिन इसी बीच में एक दौरान फोर हैंड हक कर दिया। करण भागते हुए एंड जोन की तरफ में, क्या पकड़ पाएंगे? जी नहीं, ये टर्न ओवर हुआ। काफी अच्छा रन था यहाँ पे करण की तरफ से और बहुत ही प्यारा फोर हैंड थ्रो था। अब क्या कहते हो ताहिर भाई? बहुत 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 अच्छा था। आई थिंक उधर एक लेआउट की जरूरत थी। करण उधर एक लेआउट की जरूरत थी। अगर वो लेआउट आ जाता, इट वुड बी एपिक, बट अ गुड रन बाय करण एंड अ गुड पुट। यहाँ टर्न होते अभी यही चांस को आई थिंक सुसाइड स्क्वाड को इससे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे नहीं। यही चांस को अगर उनको स्कोर करना है और जितना ज़्यादा गैप कम कर सकेंगे उतना उनके लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ एक और डीप जाते हुए और हक ले लिया है। जगदीश ने हक ले लिया, जो बाहर जा रहा है, जो नहीं, जो अंदर है। ओ और यहाँ पर्सपेक्टिव दे क्यूमेल का बहुत ही बढ़िया ट्राई था, उन्होंने पूरी कोशिश करी इस थ्रो को अंदर रखने की, पर वो बाहर हो गया। सुशांत ने डिस्क उठाई है, सुशांत के ऊपर फोर्स फोर हैंड करते हुए लग रहा है एक और लंबा, ऊपर से एक हैमर मार दिया। जब बाहों में दम तो काहे का गम, बहुत ही बढ़िया हैमर था यहाँ पर। क्या ये फोर हैंड मारेंगे? जी नहीं, उन्होंने दिया पीछे। सुशांत भाई पीछे गए डिस्क लेने के लिए, सन्नी पीछे से भागते हुए। सन्नी को अभी तक एक बार भी डिस्क नहीं मिली है, पता नहीं वो कहाँ पे ग्राउंड में घूम रहे हैं, तो पर कोशिश पूरी करें और डिस्क लेने के लिए। जी हाँ, मिल गई है, जैसे नाम लिया वो आई गए। ये तो वही बात हो गई, भगवान का नाम लिया और वो प्रकट हो गए। नंबर 17 के पास में डिस्क, 17 ने पीछे बांध दिया सुशांत भाई को वापस में। सुशांत भाई देख रहे हैं क्या सन्नी आ रहे हैं कि दे दो भाई, आगे दे दो। सुशांत के पास में डिस्क, सन्नी आगे अपलाइन थ्रो कर दिया, क्या वो डी होगा वहां पर? जी नहीं, टर्न ओवर हो चुका है। थोड़ा पेशेंस का जरूरत भी है, बिकॉज आई थिंक मुझे लग रहा है एसिस बहुत थोड़ा ज़्यादा हरी कर रहा है स्कोर करने के लिए। यहाँ पे अगर वो पेशेंस दिखाएंगे, जिस हिसाब से उनका स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर था उस हिसाब से भी फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ डिस्क जगदीश के हाथ में, जगदीश स्मृति दुश्रीवा डीप में ध्वनि जा चुकी है एंड जगदीश को देखते हुए, और आई थिंक हाथ पे दैट्स एक्सेप्टेड फाउल। स्टॉल काउंट गोज टू 0। शिवा के पास डिस्क है, आगे स्मृति टू क्यूमेल और क्यूमेल टू बैक टू स्मृति एंड टू शिवा एंड जोन के पास। यहाँ शिवा के पास आगे डिस्क है, बैक टू स्मृति एंड और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साथ 2-2-3-3 कटा रही है। रोहित भाई थोड़ा पैनिक कर रहे हैं वो लोग।
जी इसी दौरान एक कॉल हो चुकी है, अब वो हमें पता नहीं यहाँ से क्या, शायद वो बता रहे हैं कि उनको वो धक्का मार के आगे डिस्क लेने के लिए गए हैं। जी हाँ ताहिर भाई, अक्सर ऐसा होता है कि एंड जोन में जो है डिस्क लेने के लिए वो क्लियर नहीं होता और लोग 2-3 का टेक साथ में दे देते हैं, जो टर्नओवर का कारण भी बन जाता है। तो अभी सुशांत जो है शायद वो कॉल को समझने के और बताने के लिए गए हैं कि वहाँ पे जो भी रूल है उसको क्लैरिफाई करने के लिए गए हैं। मुझे लगता है इसने जिस प्रकार से शुरू किया था उनको उसी प्रकार से खेलना चाहिए और ये बढ़त जो है वो बनाए रखनी चाहिए। दोनों ही टीम जो काफ़ी जल्दबाजी कर रही है स्कोर करने की। उम्मीद है गर्मी सिर्फ इनके अभी शरीर में ही है, ये दिमाग तक ना पहुंचे, वरना ये गेम और लंबा चल सकता है। आई थिंक उसे कंटेस्ट किया है के पास डिस्क, और ध्वनि और क्यूमेल को देख के एक और स्कोर और कैपिटलाइज कर लिया है इधर सुसाइड स्क्वाड ने। स्मिथी टू क्यूमेल स्कोर, स्मिथी टू क्यूमेल स्कोर, स्कोर इज 9-6, 9 टू एसेस एंड 6 टू सुसाइड स्क्वाड। यहाँ सुसाइड स्क्वाड धीमे धीमे एक छोटा सा कमबैक कर रहा है रोहित भाई, जहाँ पे स्कोर जहाँ था 8-3 अभी 9-6 है, और 9 टू एसेस 6 टू सुसाइड स्क्वाड। यहाँ धीमे धीमे एक छोटा सा कमबैक हो रहा है, और अगर एक और 2 पॉइंट अगर ले आता है बैक टू बैक सुसाइड स्क्वाड, तो यहाँ पूरा प्रेशर आ जाएगा एसेस के ऊपर। जी बिल्कुल ताहिर भाई, हमारे ऋषभ भाई भी जो है सुसाइड टीम से खेल रहे हैं, सुसाइड स्क्वाड से, वो हाई हेलो करते हुए वहाँ से। क्या है, टाइम आउट लिया गया क्या यहाँ पर? जी 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 दोनों में दिख रहा है, दोनों थक भी गई है। सुसाइड के पास अभी तो काफ़ी समय बाकी है, सुसाइड के पास काफ़ी मौका है अभी कमबैक करने का, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है इनके पास में जगदीश। और कोच साहब रघुवीर जो है वो लाइन पे जाके समझाते हुए, अभी रेशियो के बारे में बात हो रही है, वो बता रहे हैं कि लाइन पे जो है 4 गर्ल्स होनी है, 4 बॉयज़ होने हैं। अभी अभी हमारे वॉलंटियर ने अपडेट दिया है दोनों टीम्स को कि रेशियो जो है वो बॉयज़ का होना है, 4 बॉयज़ जो है वो लाइन पर होंगे दोनों तरफ से। जगदीश फिर से पुल के लिए तैयार। ऑफेंस लाइन पे एसिस की तरफ से शीतल, सनक, तालिब, अजय, पवन, रिजवान। ताहिर भाई रिजवान के बारे में फैक्ट बताना चाहूँगा कि मैंने इनको जो है मोस्टली उन मैचेस में देखा है, मतलब ये जिस भी टीम में होते हैं इनकी टीम जो है अक्सर सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही होती है, चाहे वो भले ही जीते ना, बट ये सेमीफाइनल फाइनल में ज़रूर होते हैं। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? यहाँ से पुल हो चुका है इसी दौरान। अजय ने डिस्को कैच करा, अजय ने आगे पास करा पवन को, पवन आगे की तरफ देख रहे हैं अपने प्लेयर्स को, वो शायद उन्होंने पहले ही काउंट करना स्टार्ट कर दिया था, वो बता रहे हैं आप पीछे से स्टार्ट करें। यहाँ से एक 4 हैंड थ्रो कर दिया, इसे बीच में इन कट मिला तालिब की तरफ से, तालिब ने थ्रो किया सानिया को, थ्रो पीछे रह गया, टर्नओवर यहाँ पर। जग्गू के पास में जेडी के पास, जेडी ने यहाँ से बहुत ही प्यारा 4 हैंड ब्लेड थ्रो फेंका हैंड जोन की तरफ में, जी पकड़ लिया है इन्होंने, तालिब गए थे भागकर, लेकिन स्कोर सुसाइड स्क्वाड जो है वो अभी वापसी कर रही है, हाफ टाइम के बाद से बहुत ही बढ़िया खेल रही है। मैं बोल रहा हूँ जिस हिसाब से कैपिटलाइज कर रही है, और यहाँ एक छोटा सा कमबैक होते हुए दिख रहा है रोहित भाई, यहाँ होगा एक कमबैक, मुझे पता नहीं फीलिंग आ रही है, बट हाँ जैसा आप बोल रहे थे मेरे हिसाब से एक जो टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंचेगा वो एसेस है, और क्योंकि मेरा भाई रिजवान भी उधर है तो थोड़ा सा बायसनेस भी है। स्कोर अभी है करंटली 7-9,
7-9-9. ये मैच चलता हुआ इधर। आई थिंक लास्ट 5 मिनट बाकी है और इधर एक ट्विस्ट बाकी है। लास्ट 3 मिनट। एसिस ऑफेंस के लिए तैयार। नीले के पास में डिस साइड लाइन की तरफ में नीला आगे दिख रहा है। शीतल इन कट के लिए आई, नीले ने मना किया। नीले ने एक राउंड थ्रो किया यहाँ पर, उछल कर पकड़ा इन्होंने। यहाँ से 4 हैंड कर दिया सुशांत ने, बहुत ही प्यारा बेहतरीन। केपी साथ में भाग रहे हैं एंड जोन की तरफ में और ये टर्नओवर बहुत ही अच्छा लुकता है यहाँ पर वैसे सुशांत का ये, बट लेकिन और डिफेंस भी काफी केपी बहुत बढ़िया भागते हैं। और ये पॉइंट सुसाइड स्क्वाड अगर कैपिटलाइज करता है तो स्कोर 9-8 हो जाएगा। मुझे जिंक्स नहीं करना है, मुझे कॉमन का जिंक्स नहीं लगाना है इधर। नहीं, there is a hard cap, सागर there is a hard cap of +1। कोच सागर आते हुए वो थोड़ा चिंतित लग रहे हैं टीम के लिए इधर। क्या उनका टीम जो है थोड़ा जहाँ 7 पॉइंट का, क्या जहाँ 6-5 पॉइंट का जो लीड था वो अभी सिर्फ 2 पॉइंट के उसमें रह चुका है। और जिस हिसाब से कैपिटलाइज कर रहा है सुसाइड स्क्वाड, उन्हें अपना गेम प्ले और लाइन फिगर आउट हो गया है। कुणाल के हाथ में डिस्क, कुणाल देखते हुए आगे, कुणाल पीछे 12 नंबर को दे दिया है डंप और यहाँ टर्नओवर, इसकी जरूरत नहीं थी। जी हाँ, ये कुछ लो थ्रो करना चाहते थे लेकिन वो फड़फड़ाता हुआ जो सीधा जमीन में ही जाके घुस गया वो थ्रो। अभी नंबर 36 जो है वो डिस्क उठाने के लिए जा रहे हैं, शायद मानव नाम है उनका। फोर्सिंग 4 हैंड करते हुए केपी, नीले के हाथों में डिस्क, नीले आगे की तरफ देख रहे हैं। नीले ने लेफ्ट हैंड से थ्रो करा है यहाँ पर। नीले वापस से नीले के पास में काफी अच्छा यहाँ पे 12 नंबर ने ट्राई किया था डी लेने के लिए, नीले मना कर रहे हैं। ये पीछे राउंड थ्रो ही देखेंगे, टॉस करा जी, यहाँ पे मिल गया सुशांत भाई को। सुशांत भाई ने आगे से 4 हैंड फेंक दिया एंड जोन की तरफ में भागते हुए। बहुत ही बढ़िया ट्राई था यहाँ पे, ले आउट करके पकड़ने की कोशिश थी लेकिन उससे पहले कुछ बीच में पिक कॉल चल रहा था। सपना ने भरपूर कोशिश करी इस थ्रो को पकड़ने की पर वो पकड़ नहीं पाई। डिस्क वापस आई है सुशांत के पास में, पता नहीं क्या कॉल थी। मुझे लगता है पिक कॉल हुआ था और यहाँ पे एक थोड़ा गलत कॉल जो बनती है। सेल्फ फिट स्पोर्ट है, प्लेयर्स आपस में डिसाइड करते हैं, बट ये टर्नओवर स्टैंड करना चाहिए था और प्लेयर्स को रूल्स पता भी होना चाहिए। यहाँ पे बढ़िया मानव का नीले को फॉरवर्ड पास, वापस स्विंग करते हुए सुशांत को, और मानव बेहतरीन अंदर, और व्हाट अ ब्रेक थ्रो सुशांत, और पूरा ब्रेक साइड ओपन है इधर। और यहाँ पे और व्हाट अ डी यहाँ पे टर्नओवर हो चुका है और यहाँ पे एक और मौका कैपिटलाइज करने का मिल चुका है सुसाइड स्क्वाड को। अगर आप देखेंगे कोमल अपना पेट पकड़ के चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। केपी के हाथों में डिस्क, केपी ने आगे अपलाइन थ्रो दिया है नंबर 17 का। दोनों गिव को खेलते हुए आपस में काफी तेज थ्रो था यहाँ पर, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई भी आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर इनको चांस पे चांस मिल रहे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे टाइम आउट लिया, बल्कि समय समाप्त हो चुका है। क्या यहाँ पर टाइम आउट ले सकते हैं? प्लीज इनको इन्फॉर्म किया जाए कि टाइम आउट नहीं ले सकते, समय समाप्त हो चुका है। इस सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे इस स्कोर के बाद जो है गेम 2+1 होगा, तो ये टाइम आउट जो है बिल्कुल भी वैध नहीं है।
गेम शुरू हो चुका है। इसी दौरान में सुशांत जा रहे हैं डीप की तरफ में, यहाँ पे हक हो चुका है भागते हुए। क्या सुशांत पहुंच पाएंगे? टर्नओवर का यहाँ पकड़ेंगे? जी हाँ, पकड़ लिया है। जी हाँ, ये स्कोर हो चुका है। बहुत ही बढ़िया रन यहाँ पर, +1। एस को अभी जीतने के लिए एक स्कोर करना है और सुसाइड को जब तक वो एस को पीछे ना छोड़ दे तब तक उनको वो स्कोर करते रहना है। दर्शकों को बताना चाहूंगा अभी जो है वो गेम टू 11 है। जो भी टीम अभी जाके 11 स्कोर कर देगी वो इस मैच को जीत जाएगी। मौके बहुत मिले सुसाइड स्क्वाड को, मुझे लगता है उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया है जिस प्रकार से उन्होंने गेम खेला है। कोच रघु समझाते हुए उनको कि आप शांति से खेलें। कोच सागर बहुत ही शांत नजर आ रहे हैं अभी अपनी लाइन पे। कमेंट्स है या नहीं, कोई क्वेश्चन है कि नहीं, वो देखना है। हाँ जी, मैंने अपडेट कर दिया दर्शकों की गेम 2 जो है वो 11 है। जब तक दोनों टीम में से जो भी टीम पहले 11 कर लेगी वो इस मैच को जीत जाएगी। ताली पुल के लिए तैयार, काफी पीछे से आ रहे हैं अपने बाजू को ऊपर चढ़ाते हुए। लगता है डिस्क बाहर फेंकने की तैयारी है और यहाँ से इन्होंने 4 हैंड रख, मुझे लग रहा था बैक हैंड फेंकने वाले हैं। काफी फ्लोट है इसमें, लग रहा है ये डिस्क के पहले यही पहुंच जाएंगे शायद से। जी हाँ, लगभग वो पहुंच ही गए थे। जग्गू ने आगे पास किया नंबर 12 को, जग्गू के हाथ में डिस्क। जग्गू 62 नंबर मार्क करते हुए वहां पे क्यूबल के हाथ में डिस्क, क्यूबल पीछे दे रहे हैं जग्गू को। जग्गू आगे देखे, जग्गू ने पकड़ते नहीं आगे पास करा। जग्गू के हाथ में फिर से डिस्क वापस आ गई है। अब भाई कमेंट करना कुछ आ रहे हैं तो। यहां से 4 हैंड हो चुका है एंड जोन की तरफ में, क्यूबल भागते हुए जा रहे हैं। क्या वो पकड़ पाएंगे? हाथ में फंबल हुई, गिरते पड़ते और डिस्क टर्न ओवर, वो पकड़ नहीं पाए। इसके पास मौका जिसको वो बहुत आराम से लेके इस मैच को समाप्त कर सकते हैं या फिर वो अपनी गलतियों को और बढ़ा सकते हैं। रोहित भाई, दर्शकों का ये मानना है कि उनको दे नीड द कमेंट्री इन इंग्लिश। सॉरी गाइस इफ यू आर स्पीकिंग इन हिंदी। थोड़ा हमें भी मिक्स मैच करना पड़ता है। वी आर ऑल्सो मिक्सिंग एंड मैचिंग द कमेंट्री। आई कैन ट्राई डूइंग कमेंट्री इन इंग्लिश एंड रोहित भाई विल बी डूइंग कमेंट्री इन हिंदी। जी हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे दर्शक चाहे उसी प्रकार से। बहुत ही बढ़िया डी यहाँ पर। काफी ऊंची जंप थी ये। उम्मीद है प्लेयर जो है वो ज्यादा घायल ना हो गया हो। उन्होंने इंजरी का साइन कर दिया है, वो बाहर जा रही हैं मैदान से। क्या जा रही हैं? जी नहीं, उन्होंने मना कर दिया है। वो चाह रहे हैं कि वो खेलेंगे, वो अपना 100% देंगी टीम के लिए। और यहाँ टर्नओवर लेके देयर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी। देयर इज वन मोर अपॉर्चुनिटी विद सुसाइड स्क्वाड टू स्कोर दिस पॉइंट and then they'll have to score another 3 points because the game is still 11. There's hard camp going on, 75 minutes are up. We have Jagdish on the disc. Jagdish is looking for Siva. Komal is coming. There's a dump swing to Smithy. Pass to number 3. Number 3 looking forward to Vikram, looking forward to Jagdish, and Jagdish takes that. It's a cross, bleedy throw across the field, and a score to Komal. Jagdish to Komal. The score is 8-10 in favor of Aces, and now the Aces are on offense. The game is going down the wire, guys. The time is up and the game is +1. The game is to 11.
Suicide Squad is on 8. Suicide Squad needs 3 points to win the match. They'll have to take 3 defense points and they'll have to keep on scoring. It's a tough chance for Suicide Squad, but it's not impossible. And they are getting those turnovers. They are getting those Ds on the last point as well. A beautiful D by QML, and then they converted to a score. Hands are up by Aces. Kunal with the disc. Kunal with the disc asking everyone to be ready. And the pull is coming on 3, 2, 1. And a beautiful pull by Kunal. Sushant is going for the disc. Sushant with the disc. Sushant to Pawan. Aage. Pawan to... Again back to Pawan. Pawan looking for that upline. Manav coming back. There's a dump to Manav. Manav looking upline to Sushant. No, it's going to Sapna. Sapna to Ajay. Ajay looking for that swing. Again there's a dumb option. Sapna is free. And there's a floaty pass. Number 7 Kabi going for it. Manav with the disc. Manav is looking for a dump. There's a pick call. Pick call on Sushant. Player is catching up. Manav with the disc. Manav on the disc. Up और यहाँ डिस निकल गया और यहाँ टर्नओवर आ सकता है. यहाँ टर्नओवर आ गया है. There's a turnover. Suicide Squad has finally got the disc. Now they are on offense and they have an opportunity to score this, to make it 9-10. Jagdish on the disc. Jagdish, what a beautiful breakthrough to Kunal. Back to Smriti to, and Pawan, beautiful mark by Pawan on Jagdish. They are not taking any risk right at the moment. No risk has been taken by. And a blady throw to Kunal to Kabil, and that's a score. The score is 9-10. 9-10 to Suicide Squad. And a beautiful D conversion to offense and a score. A great point by Suicide Squad, and they are looking full pumped up. But there's one more problem, Rohit bhai. एक प्रॉब्लम है इधर. The problem ये है क्या same line बार बार खिला रहे. They are repeating the same lines. Again Jagdish is going on. If you see QML, he's tired. Dhoni is stepping in. Kunal, the score went from Kunal, assist, score to Kabil. Up next, till the time this match is going on, next match on this field, we have Fly Wild versus Aces. And on field 2, we have Ambush versus Rajalis. Choose your match, guys. Both are very interesting. Both will be going down to the wire. Do not miss any match if you're at home. Also, guys, do subscribe. It helps us a lot. Do subscribe to our channel. If you're watching live, do click on that like button and stay tuned for the next match. Back to this match. We have Suicide Squad on 9 coming on defense, and we have Aces on 10 playing offense this point. If Rohit bhai, if Suicide Squad manages to get a D and they manage to score this point, then the match will go on Universal. And what would be a story if Suicide Squad wins this match right in front of Aces' noses?
जी बिल्कुल भाई। अभी गेम पे वापस आते हैं। सानिया डिस्क उठाने के लिए गया। मुझे लगता है जिस यहाँ पे सिर्फ सिंपल पाचेस देखेगी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी जो है लंबे पाचेस खेलने वाला प्लेयर है। अभी नीले ने एक राउंड थ्रो दिया है। वापस से नीले को थ्रो मिलती है। नीले आगे फोर हैंड अप देते हुए तालिब के पास में डिस्क। तालिब ने पीछे, तालिब आगे गए हैं डिस्क लेने के लिए, मिल गए। यहाँ से पिक कॉल हो चुका है। जिगर पिक कॉल है, खींच लिया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि पीछे कॉल चल रही थी। वो तो बस खुशी मनाने ही वाली थी। आई थिंक कुछ कॉल हुआ है इधर, लाइन का कॉल है, यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है। थोड़ी चीज़ें और जो है, there are certain things that players are not using hand signs to describe what call is this, so even if we are unable to tell you guys that what call is being made on the field, but the disc goes back to Talib. Kush is marking Talib. There's a violation call. Finally hand signals coming up. It's very good to see hand signals on the field so that we also get to know what's the call. This is Talib and the play starts, and a beautiful throw to Sapna, to Sheetal to Sapna, to Sania, and Sania takes that throw to Talib, and they're very close to finish the match. It's near the end zone. Will Aces be able to do that? And no, it has been put to the ground by Talib. बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में देखिए तालिब इस मैच को ख़त्म करने की। बहुत सिंपल पासिस के जरिए भी जो है इस मैच को ख़त्म किया जा सकता था। मुझे लगता है उनको पीछे अराउंड थ्रो लेने के लिए कोई आया नहीं, जिस वजह से उन्होंने वो थ्रो जो है सीधा एंड जोन में ही फेंक दिया। आई थिंक उधर बहुत ज़्यादा टाइम था तालिब के पास। तालिब ने 2 या 3 सेकंड में वो थ्रो कर दिया। नाउ डिस्क इज विद जगदीश, the disc is back to Sucide squad, and there's a strip call, accepted strip call to Moni. It's 0-1. This is with Moni, number 1, and the disc is being dumped back to Smiti. Smiti looking for another dump to Jagdish. Dhwani is getting free. Kyomil is coming in, and and to Dhwani to Moni to Jagdish, and there's a good flow going on. Jagdish to Kush looking for someone else, but no, back dump, another dump to Jagdish to Smiti looking on the break side to Dhwani looking forward, but Dhwani looking for down, and to Moni to Jagdish, another swing. There are swings happening, they're looking for cuts, and a good cut by Kyomil looking back to Jagdish, and a pass to Jagdish again, and Kush, a beautiful in cut by Kush, but there's a pick call by Talib on Kush. I don't know why, Rohit bhai, I have a feeling that this match may go on to universe the teams. I think the Sucide squad is getting a little bit loose. Not the Sucide squad, I'm sorry, but the Aces. The Aces had a lead of 5 points, but now the score is tied. And the way the Sucide squad has played after the half, they have capitalized each and every mistake made by Aces. The line call, if you see, we have Jagdish on the line, and he has been a very safe handler for Sucide squad. After the turnover, he has been moving up the disc, taking the short passes with Smiti, with Moni, on last point there was Kush. Now on this point we have Vikram, we have Kunal coming in the squad. On the line we have Namrita, and on the other hand with Aces we have Ajay, we have Sushant, we have Pawan, we have Kritika, we have Anuntya, we have Sapna, and we have Moni. It's a 3-man squad, 3-man line.
जी हाँ, हाफ तक पहुंच चुके हैं और इसके पास ये अच्छा मौका है क्योंकि वो ऑफेंस पे है तो उनके पास स्कोर करने का मौका है। उनको टर्न ओवर करके जो है सुसाइड की तरह वो नहीं लेना है स्कोर। काफ़ी अच्छा मार्क यहाँ पे केपी का। पवन के पास में डिस, पवन ने आगे पास करा अजय को। अजय देख रहे हैं अराउंड थ्रो के लिए, सेफ पास देख रहे हैं और पवन के हाथ में डिस। पवन देख रहा है आगे की तरफ एंड जोन की तरफ में, उम्मीद है कोई लंबा पास ना करे। सुशांत आए, भक्के इन कर दिया, सुशांत के हाथों में डिस। सुशांत ने सेफ पास करा, पवन के हाथ में डिस्क हवा में थे, केपी गए उनके डिस्क लेने के लिए पर हुआ नहीं। अजय के हाथों में डिस्क, पीछे एंड जोन में लड़की जाती हुई, पीछे देख रहा है अराउंड थ्रो, पवन ने लिया वापस से, पवन देख रहा है और यहाँ पे एंड जोन में थ्रो। काफी थक चुके हैं ऐसा लग रहा है जीडी, काफी देर से खेल रहे हैं। फोर्सिंग फोरहैंड करते हुए सानिया साइड एंड की तरफ में गई, उनको मना किया सुशांत ने ऊपर से फेंक दिया एंड जोन। पवन के पास, पवन ने आगे पास किया और स्कोर एस। ये मैच जीत चुके हैं। बहुत ही बढ़िया मैच था ये, क्या कमबैक था यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड का। Good comeback by Suicide Squad, but unfortunately Aces took the win. They had a better advantage since the beginning, and the game goes to Aces. We have a next match. Aces will be playing. Next match is starting at 10:30. 10:30 in 12 minutes. Yeah, in 12 minutes on this field, guys. Stay tuned, guys. On field 1, I repeat, on field 1 we have Aces versus Fly Wild. Aces have just won a wonderful match by 1 point. They have took the match on Universal from Suicide Squad. Next match we have is Fly Wild versus Thank you so much guys for tuning in. Keep liking the video if you are watching live. Do subscribe if you have not subscribed. This is Tahir Siddiqui signing off this match.